Uh, so tomorrow we are having our paper of stylistics, and some of the students were saying that they are facing the problem about the multi levels of the stylistics analysis. Uh, I hope you are listening me right. If my voice is coming to you, then write in the comment that you are listening to me. Then we would be talking further. Uh, right? Yes, if you are listening me, any of you can in the comment section. Yes. Okay. Yeah. Uh, Students are basically confused about the levels of stylistics, which are semantic level, syntactic level, syntax, all these. Uh, Before going to these levels of analysis, first keep in mind that if you read on the page number uh, of this book, Style and Fiction, on page number uh, there are two basically graphs which are central to these discussion. The one is I would be making that on the chapter number 4, 4.1, the very 4.1 section. That's very important. Once you read this one, then you would be able to realize that what is the importance of these levels. So it says that language is basically as a cognitive code. From the cognitive code, we mean that means there are different levels of language. One is called the syntactic level, but that code is very much cognitive. Cognitive is concerned to the mind. Uh, Means if you come to that this point, this one speaker, it's on page number 96. There is a chart, and it is going to display that on the one part is the spoken language and on other part is the written language. What are the claims of this? Means there in the communication, one is the sender and other is the receiver. You know this one, sender, receiver. This is the spoken form of the communication. And then uh, there is also another form of that, that is the written discourse, means the written form. Even in that written, one is the sender, means that text act as a sender. For example, if you may see over this, this is a text, this one is the text, this one is the text. So this text is basically working as a sender, and when you would be reading this one, you would be decoding this one. So this comes to the orthographic or the graphological study of the language as well. For example, I am speaking, I am the sender, and you are decoding my message. This is the spoken form, this is the spoken context. And when I show you this one, so this orthographic or written form is the sender, and you are going to decode this text, and that would be giving you as uh, some sort of understanding, decoding that construction of the meaning. So going on that chart, you may see that there is the semantic level, syntactic level, and phonological level. On the level of this uh, spoken category level, syntactic level, and phonological level. Phonological means phoneme level. The listener or the hearer basically decodes the spoken format, phonemes. Phoneme is basically the minimum category are decoding my phonemes. This would be on the spoken level, this would be the phonological level. And when we include that written level, then it becomes as the graphological. In written language, these three levels are involved: semantic level, syntactic level, and graphological level.
On the spoken is the phonological level, and on the written language it becomes as the graphological level. And the written discourse, two levels are common: semantic level and syntactic level. And on the spoken is the phonological level, on the written is the graphological message. As means language is a code of interpretation between the hearer and the listener. And among this cognitive code, three levels are involved. In spoken they are different one, and in the written they are the different one, and only one level is different from spoken and written, while the two others share the same one. Means in the spoken and the written, both syntactic and semantic level are the same, while in written it becomes orthographical, sorry, graphological, and in that spoken it becomes the phonological level. I think it's clear to everyone. So then comes the other point, that how that message is conveyed in our next chart, which is very important. That is on the page number. Uh, See this page number chart on 98 page as well. This is also very interesting one. Means we use our real knowledge as well, and this from the sentence structure, what the function does it perform in what this function they are going to perform in that structure, we come to know. For example, if you come at the page number 98, the first one is the semantic, then is the syntactic, and then is the graphological level times. So non-easy and non-soft uh, uh, is the semantic. If we take that this is it's not an easy task, it means that it is hard. And for many times we use often and the frequency of the different graphological, it might be written the first sa, saw, it is as a verb. ये लकड़ हारे कटर सा, मतलब सा, he can see, he can saw as well. He might, if अगर हम इसके इवन हमने ये देखना होता है कि what the function they are going to perform in that sentence. अब अगर इस पे देखें, सा नाउन के तौर पर भी काम करते हैं, वर्ब के तौर पर भी करते हैं. अब ये जो जजमेंट लिखा हुआ है, दिस जज है जजमेंट, और दूसरी जजमेंट में जीई आता है, तो ये दूसरे दोनों फॉर्मेट्स में लिखा जाता है जजमेंट ना. अब एक जजमेंट, द फर्स्ट जजमेंट फॉर द जजमेंट मीन फॉर ऑर्डर. जब वो ऑर्डर के सेंस में आएगा तो जज. उसके बाद दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है इसका मैसेज एंड द मॉडल्स ऑफ रियलिटी. दिस इज वेरी मच what we say basically, that is to convey a message. Focus on the referential systems, references. What does it refer? This refers text. This text are the message or the sender refers to whom. तो वो कहते हैं कि इसमें हम डिफरेंट किस्म के रेफरेंशियल्स को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल उसने यूज किया है कि अगर हम कहते हैं कि yesterday was my birthday. Yesterday refers to this today. And if someone says that on the 30th June was my birthday, for example, yesterday it was 31st August. If I say on the 31st August is my birthday, this would be conveying more focus to the date, mean 31st August. This is another style of the saying the things. But if I say not as the month and the day of that month, for example, 31st August is my birthday. So 31st is the day of a year, of a month, and then month August.
August is an another category. But if I say yesterday was my birthday, it means that I am more referring to the thing that yesterday, sorry, August was my birthday. So it's not so as clear as well. So means to construct the reality, we see the sense reference given over there, and more interestingly, which was I'm more majorly concerned, that style is more appropriate and is more applied in the fictional things, and the fictional reality is different from that of the actual reality. And models of reality means एक side पे message है, on the both side are the message. On one side is the reader, and on the other side is the reader decodes. Yes, this one. Uh, on the first one is the reader decodes, writer encodes, sender and the receiver. That is the message. I am sending you a message. So the most important is the message. And if I say, sorry, and you are going to intended to receive that message, आई एंड डिकोडिंग के प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, तीनों लेवल्स होते हैं। जो ग्राफोलॉजिकल लेवल है, देखें सेमेंटिक लेवल है, सिंटैक्टिक लेवल है, ग्राफोलॉजिकल लेवल है। क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है तो इसको इसलिए ग्राफोलॉजिकल लेवल कहेंगे। अगर ये स्पोकन होता तो इसको फिर मॉर्फोलॉजिकल लेवल कह देते ना। तो अब इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टाइल एंड फिक्शन, फॉर एग्जांपल ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो इसका सेमेंटिक लेवल भी एक्सप्लॉइट करते हैं। शुरू में हमने जॉनरा एनालिसिस, हमने सिंटैक्टिक लेवल्स की और जो तरतीब है, फॉर एग्जांपल yes, first let me complete, later on we would be talking to your answers that actually diverts my attention as well. Keep writing in that comment section. I would be reading all comments or the question by the end. So in order to decode, एक कोई अगर ऐसी कॉन्टेक्स्ट है where the people, मैं आपको ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल सुनाता हूँ। दिस इज अ रियल लाइफ रिकॉर्डिंग है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। साथ मतलब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है, ऑनलाइन क्लास चल रही हो, तो वो ऐसे ही कहती है कि ओ हाउ आर यू, तो पाकिस्तानी खातून के मुंह से निकल जाता है कि शॉर्टकट, सो द यूपीएस। आगे वो कहती है कि व्हाट इज यूपीएस। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि व्हाट इज यूपीएस, हमें हमारे घर में यूपीएस तो होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यूपीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट का है, अर्जेंट पावर जनरेटर का है यूपीएस, मतलब हमें बहरहाल इसका नहीं पता कि यूपीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो वो खातून अब चूंकि वहां पे उनके पास यूपीएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो he might be feeling difficulty, might be feeling difficulty in understanding the message of UPS. हम सोशल रियलिटी को उस मैसेज को इवॉल्व करने के लिए वो करने के लिए यूज करते हैं। ये तीनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इनको वजाहत करता जा रहा हूँ। To decode a message, all these three levels are equally important. And feeling difficulty in understanding, जो essential चीज होती है वो हमारा होता है मैसेज। और स्टाइल क्रिएट भी हम इसलिए करते हैं टू कन्वे द मैसेज इफेक्टिवली, मेक आवर स्टाइल, टू मेक आवर piece of work as more poetic, we use the rhymes, and to make our messages as the more catchy, we use blur different genres or make it more stylistic. For example, ये आपने यूबीएल का वो देखा होगा, एचबीएल का के सॉरी अलाइड बैंक का देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि आपके दिल में मेरा अकाउंट। आप दिल में अकाउंट कैसे होते हैं, अकाउंट तो बैंक के होते हैं।
तो ये बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस होती है। अच्छा, एक और अगर आपको मैं बताऊं कि एक इस तरह का आया था यहाँ पे, ये यहाँ लिया में भी ना, अ, लिया में एक बोर्ड मैंने देखा था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो 8 लिखा है। ये 8% जो है वो है, ये देखें ना आप 8, लेकिन परसेंट वाला जो जो जीरो होता है ना, उसको एक को बड़ा करके लिख दिया, वो ऐसे लगता है, जो ये लिए में आपने देखे भी है, बंदे को लगता है कि 80% ऑफ कर दिया। ये मैंने आपको लिख के दिखाया, 8 के आगे परसेंट आना, तो परसेंट की नीचे जीरो वाली बड़ी कर दी, उसने ऊपर वाली छोटी कर दी, तो ये ऐसे पढ़ा जाता है कि जैसे 80% ऑफ। ये कौन सी चीज की एक्सप्लॉयटेशन है? ये ग्रोफोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन है, टू कन्वे योर मैसेज। आप ग्रोफोलॉजिकल या उस सेंस को एक्सप्लॉयट करते हैं। ये मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने देखा भी है, लइये में लिखा हुआ था, ये कोई फार्मेसी थी उस पर ना। तो मैसेज को कन्वे कराने के लिए हम इन लेवल्स को देखते हैं, सिंटैक्टिक लेवल, सेमेंटिक लेवल, फोनोलॉजिकल लेवल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फोनोलॉजिकल लेवल किस तरह इम्पोर्टेंट है। भाई चौधरी परवेज इलाही को समझने के लिए, सॉरी चौधरी शुजात हुसैन को समझने के लिए बंदे का जो फोनोलॉजिकल लेवल है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, सिमेंटिक लेवल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिमेंटिक लेवल से मुराद है कि जो मीनिंग होते हैं वो थ्रू कॉन्टेक्स्ट बेस होते हैं। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ द साइंस। टेक्स्ट बेसिकली डिफरेंट किस्म के साइंस और सोशल कल्चरल नॉलेज एक्सप्लॉइट करती है। वो अगर ना हो तो सिमेंटिक्स पूरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी डॉग इज रीडिंग द बुक, कुत्ता किताब पढ़ रहा है। अब सिमेंटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है, सिंटैक्टिकली ठीक है, सिमेंटिकली रॉन्ग है, क्योंकि कुत्ता किताब नहीं पढ़ सकता। तो यानी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है एनालिसिस में, अब आप जब वो करेंगे, ये सवाल भी आ रहा है कि कितने लॉन्ग होंगे कितने शॉर्ट होंगे। तो एक जो है वो मैं कुबला खान का टेक्स्ट दूंगा, या फिर जो है टाइगर वाला ना, इन दो नज़मों से में से, और एक वो मैंने आपको ई कमिंग वाला भी भेजा था, उसकी मैंने साथ आपको टेक्स्ट भी भेजी थी। उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। अब उसमें आप डेफिनेटली जो ई कमिंग वाली मैंने आपको भेजी थी, उसके कौन से लेवल्स हैं जो एक्सप्लॉइट हुए करें। फॉर एग्जांपल उसके ग्राफोलॉजिकल जो ग्राफ का लेवल है, ग्राफोलॉजिकल लेवल एक्सप्लॉइट किया है। अच्छा, दूसरा उसके मैसेज और मीनिंग जो है वो यानी ह्यूमंस के हवाले से उसने कहा कि हम ये मॉर्टियंस क्या कर रहे हैं, वी आर इन द सेंस ऑफ कंपटीशन। तो उसने सेमेंटिक्स को भी बेसिकली एक्सप्लॉइट किया है कि हम ये एक आम सी बात है कि वी वांट मोर, वी वांट टू सर्व लेस। इवन उसने वर्ड जो सर्व था उसको भी एक्सप्लॉइट किया है ना, सर्व से मुराद सर्विस से, और टू गेन मोर एंड मोर एंड मोर एंड लेस, वो वर्ड सेंस ऑफ कंपटीशन के लिए यूज किया है। तो ये 3 नज़में जो है मैं आपको एनालिसिस के लिए दे सकता हूँ, लाजमी नहीं कि आई एम नॉट बाउंड टू टेल यू कि कौन सी नज़म आएगी। तो ब्लैक खान और द टाइगर, और टाइगर के डेफिनेटली आपने मज़ीद नेट से भी उसका देख लेना है, उसकी टेक्स्ट अवेलेबल है कि किस कौन कौन से राइम स्कीम और किस तरह की उसने मैसेज अपना कन्वे करने के लिए, फॉर एग्जांपल उस टाइगर की वाइल्डनेस शो करने के लिए उसने कितना कुछ, मतलब सेम टाइम बाइनरी अपोजिशंस यूज की है एक ही स्टाइल में, एक ही लाइन में। बाइनरी अपोजिशंस कहते हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिला देना, दो मुख्तलिफ मुतजाद चीज़ों को एक ही टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करना, बाइनरी अपोजिशन कहलाता है। तो कुबलाई खान की पोएम लेवल है, सेमेंटिक लेवल होता है, सेमेंटिक लेवल होता है नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड। नीचे एनालिसिस दिया खड़े, आपने उनको एनालिसिस नहीं करना, आपने सिर्फ ये इनके जो रियलिटी वाला सवाल है
और ऊपर वाला ग्राफोलॉजिकल, सॉरी, मैसेज की इंपॉर्टेंस वाला ना, मैसेज, सॉरी, मैसेज एज कोग्निटिव और मैसेज एज मॉडल ऑफ रियलिटी, ये दो सवाल हैं और उनमें लेवल्स इन्वॉल्व हैं, तीनों लेवल ना होंगे पेपर में। एक सवाल तो एनालिसिस का होगा, इट माइट बी फ्रॉम 5 to 7 or 8 वर्ड्स का होगा। हमारा 30 नंबर्स का मिड टर्म है, तो उसमें से 7-8 नंबर के ये हो गए। उसके बाद सर ये क्वेश्चन था, यस डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, मल्टी, अच्छा, मल्टी लेवल अप्रोच टू स्टाइल, ये भी बच्चे उसके साथ ही रेलेवेंट हैं। बच्चा कह रहे हैं कि जो मैंने कहा था आपसे, जजाकल्ला, आपने वो वाला गाइड कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लेवल्स वाला, 28 उस पर, ओके, 8 के ऊपर लेवल्स ना, वो भी देख ले। तो बाकी जो है पेज, तो यू कैन आस्क एज वेल। इसमें बेसिकली जो मल्टी लेवल अप्रोच टू है ना, अप्रोच टू द स्टाइल, ओके, आई वाज थिंकिंग कि मुझे बच्चे भेज रहे थे कि भाई मल्टी लेवल्स वाला, तो ये बेसिकली मल्टीपल अप्रोच है, ये और है, लेवल्स और है। जो मल्टीपल अप्रोच टू स्टाइलिस्टिक्स है, इसमें बेसिकली ये है कि जब हम स्टाइलिस्टिक्स डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन। इसका मैं सिंपल आपको बताता जो, स्टाइलिस्टिक्स इस तरह नहीं है कि जी वर्ड राइटर ने कौन सा वर्ड यूज कर दिया है, राइटर ने मतलब ना कौन सी वो यूज किया है। स्टाइलिस्टिक्स इन्वॉल्व एवरी मशीनरी ऑफ द लैंग्वेज। मैं इतना सिंपल, टू कन्वे अ मैसेज इज नॉट सिंपल। और फिर उसका एनालिसिस करने के लिए यानी जब जो फिक्शन होता है, द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट इन फ्रंट वन टू वन। मैं दोबारा वही कहता हूँ कि पूरी स्टाइलिस्टिक मशीनरी जो होती है वो स्टाइल में इन्वॉल्व होती है। तो जब हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट मेकिंग कंक्लूडिंग द राइम स्कीम ए बी सी, इस तरह की नहीं है कि राइटर ने लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ की है, फिलॉसफी कौन सी यूज़ की है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे आथर्स होते हैं जो एग्जिस्टेंशनलिस्ट फिलॉसफी के साथ लिख रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी अप्लाई हुई है। अब फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी अप्लाई करने के लिए करेक्टर किस तरह डेवलप होते हैं, कौन सी सोशल सेटिंग, सोशल सिचुएशंस कौन सी यूज होती है। तो स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी। आपके कौन से लेवल्स हैं जो उसमें इस्तेमाल होते हैं लिंग्विस्टिक्स के पैटर्न में। इट इंक्लूड्स ग्रोफोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सोशियोलॉजी, मतलब जो जो जितनी लॉजीज है ना, दे आर इन्वॉल्व इन दैट। और इन 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 इंडिकेटर्स होते हैं, जो इनहेरिटर्स होते हैं, जो टेक्स्ट में होते हैं ना। इनहेरिटर से मुराद जो हेलिडियन का कॉन्सेप्ट है कि इनहेरिटर्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। ये एनिमल फॉर्म में भी उसने हवाले दिए हैं। उसके बाद ये वाला एंड पे उसने कहा, यहाँ पे अगर आप देखें ना पेज नंबर 27 पर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इज यूज्ड इन फिक्शन टू प्रोजेक्ट अ वर्ड बियॉन्ड लैंग्वेजेस। In that we use not only our knowledge of the language, the meaning of the words etc, but also our general knowledge of the real world to furnish it. It is important in this case because only on this assumption can one explain the experience a reader gets from the
inheritors of looking round the sides of the log views to see a more substantial reality beyond it. It is as we have two pairs of eyes. देखिए कितना अच्छा लफ्ज उसने यूज किया कि हम हमारी दो पेयर्स ऑफ आईज होनी चाहिए, हमारी आंखें। क्योंकि फिक्शन बेसिकली, अब हम ये कहते हैं कि घर में हम पोएट्री यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज द पोएट्री विद आवर फैमिली मेंबर्स। लेकिन फिक्शन में फिक्शन की जो रियलिटी होती है वो बियॉन्ड होती है। तो स्टाइलिस्टिक्स में बेसिकली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस हो रहे थे। तो स्टाइलिस्टिक्स डज नॉट हैपन on a one level, but it happens on all levels of analysis, uh, all levels of styles, all levels of sociology, psychology, मेटा कोग्निटिव कहते हैं जो जेन के बंदे के सोच में भी ना आ रहे उसको मेटा कोग्निटिव्स कहते हैं। तो जो शायर इमेजिन कर रहा होता है, तखय्युल कर रहा होता है, वो मेटा कोग्निटिव्स में आता है। यानी कोग्निटिव हमारी जेन की, और फिर मेटा कोग्निटिव पूरा एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल हम खाना काबा को इमेजिन कर लेते हैं, तो क्या चीज़ ऐसी होती है कि हम खाना काबा को, हमने कोई इमेजेस देख रहे होते हैं, हमने उस फिर अपने माइंड को रिट्राइवल के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर हम वो एक पिक्चर देखते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ना। तो ये मल्टी लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स और हैं, और लेवल्स ऑफ जो मीनिंग और एनालिसिस है वो और है। ये याद रखिएगा, ये और हैं वो और हैं, मैंने वो वाले दिए थे। ये बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स की अप्रोचेस हैं, ये अप्रोच है, वो लेवल्स ऑफ मीनिंग है। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? तो ये, हाँ, ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि ये दो सवाल है, तो हाँ ये दो सवाल है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी अपने बताया था, ये दोनों क्वेश्चन आपने अलग अलग बताए हैं, तो इट मीन्स दैट ये दो क्वेश्चन टाइप करने हैं। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? Everything is okay, right? In the comments if it is okay, I am going to, if you have any other question I may answer, otherwise I am going to leave it. If you have any question, please write in the comment section. Yes, समन असलम क्वेश्चन, सर जी पेपर पैटर्न बता दें। सो सिंपल है कि एक पोएम का एनालिसिस आएगा, टाइगर का या कुबलाय खान का, या ई कमिंग की एक मैंने पोएम आपके साथ ग्रुप में भी शेयर की थी, उसके ऊपर लेक्चर भी शेयर किया था। ये तीन पोएम्स में से एक पोएम का एनालिसिस आएगा, आपने तीनों को तैयार करना है, और बाकी जो है वो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर पैटर्न ये है। और कोई क्वेश्चन? ये सुहेल असगर, आपका नाम क्या है पूरा? सुहेल असगर। How many of you are in the group? Please write your comments. I think there is no one. Okay, see you tomorrow. No more question. So see you tomorrow at 8 o'clock. 8 बजे, 8:30 बजे शुरू हो जाएगा पेपर। आप जल्दी जल्दी आइएगा। 90 मिनट्स का क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मुझे इससे ये पूछ रही थी बच्ची, इसका नाम है मेरे ख्याल में अनीला। मुझे ये नाम पता नहीं, सेव नहीं है। किसने क्वेश्चन पूछा, किसने था? मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है? क्योंकि ये समन असलम का क्वेश्चन ही नहीं था, और मेरे ख्याल में अनीला इरम शाइस्ता नाम था मेरा शायद। सर जी ओके। जो ये सवाल किसी बच्ची ने पूछा ग्रुप में ना, उसका नाम कोई और है, तो उससे ये पूछेंगे इज इट क्लियर टू हर? प्रीटी डॉल जो है, प्रीटी डॉल, आर यू देयर इन द ग्रुप?
Pretty doll, are you there? What's your name? Pretty doll. I think she has gone sleep. Okay, with this, goodbye. Thank you very much.